So today we start a new topic, Azure Data Factory. In here, we'll first create today Azure Data Factory. Then we'll walk through or get familiar with the portal, and we'll create a simple copy activity. Okay. These three things we'll try to complete today. All right. So this is our Azure portal. I am right now at my home page. You go on the right side, click on Create Resources. Here you can search for Data Factory. Okay. Under this, once you search it as a data factory, you will see the first option here, data factory. Click on that, and there is the option create. Okay. Click on create. In basics, our subscription is free trial, so no need to change it. Under resource group, select resource group that you are using. Instance details, we need to provide the name to our resource, that is data factory. You can provide any name. Make sure it is unique. Under region, since all our resources are created under Central India, put that under Central India. Under version, there is only one V2. So select the V2 version. Click on next. Under Git configuration, there is already a checkbox which is checked. Configure Git later. Let it be as it is. Since we don't have DevOps created, we are not going to integrate the Git or DevOps as a repository to Data Factory. Click on next. Networking. Sir, Yes, Kunal. actually I'm on previous node only. That's why I'm saying just Okay. bit slowly. Yeah. Can we start from basic? You want me to start from the first page? No, the first option, basics. Yeah, sure. Sir, Okay. sir, In sir, Dhruv here. Sorry to interrupt. yes, We can use the existing user group also, right? Resource group, is it? yes, I'm using existing one. Okay. Yeah. Thank you, sir. Yeah. Under basics, subscription is free trial. We have used, since we have only one subscription, we have used this for all our resources, right? So that's the one. You don't need to change it here anything. In resource group, you can use the existing resource group that you have used for all your services that you created, Data Lake or Synapse Studio or Blob Storage. Or if you want to create a new resource group, you can click on create and create a new resource group. ओके उसके बाद हमें इंस्टेंस डिटेल्स के अंदर नाम देने हैं। इसके नाम, हम जो रिसोर्स बना रहे हैं डेटा फैक्ट्री, उसका हमें नाम देना है यहाँ पर। ठीक है, ये जो नाम है वो मैंने दिया है, आपको जो भी नाम देना है आप दे सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। उसके बाद हमें ये सेलेक्ट करना है कि ये डेटा फैक्ट्री कौन से रीजन में रहेगी। हमारे सारे रिसोर्स हमने सेंट्रल इंडिया में क्रिएट किए हैं, इसीलिए हमने डेटा फैक्ट्री का रीजन भी सेंट्रल इंडिया सेलेक्ट किया, जहाँ पर ये ड्रॉप डाउन में सेंट्रल इंडिया। उसके बाद वर्जन, यहाँ पे वीटो के अलावा आपको कोई ऑप्शन नहीं अवेलेबल है, तो डायरेक्टली वीटो। ओके, ऑल ऑफ यू कंप्लीटेड द फर्स्ट पेज? Yes, sir. ओके,
Then moving on to the next page. Next page, यहाँ पर you just need to select one checkbox which is already selected here. Okay, this one. If you unselect this, you need to provide the DevOps account details, project name, repository name, branch name, root folder, which is all part of the Azure DevOps or GitHub. So we are not using that. So just So, click on this. sir, this also, so that means this also has provision to either use GitHub or Azure, right? In the configure a repository, is it? Like either we can Yes, link one of correct. Most of the Azure services have the provision to link it with the repository. Wherever you create something yeah. apart from the resource, there is a provision to link it with the repository. Okay. Everyone completed the second page. Any questions here? No, sir, done. No. Now click on the next. In the third page, you will find networking. Here you don't need to select anything. If you select, we have to provide the managed virtual network. Okay. So there is no need to select it. You can change this setting even after when we create an integration runtime. So let it be as it is now. In actual project, this is selected like this, and the integration runtime is created for you. Okay. Let's unselect that. Self-hosted integration runtime inbound connectivity to Azure Data Factory. We studied the integration runtime in our previous session, okay, on Friday. So integration runtimes have two types, Azure IR or auto-resolved IR and your self-hosted IR. Okay. So this one is the self-hosted integration runtime. इंटेंशन रन टाइम क्या होता है? कंप्यूट रिसोर्सेज. ठीक है. यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है कि जो भी सेल्फ होस्टेड इंटेंशन रन टाइम को इनबाउंड कनेक्शन, मतलब जो भी सोर्सेस को रीड कर रहा है, क्या उसको हमें प्राइवेट एंड पॉइंट से रिडायरेक्ट करना है या नहीं. ओके. इन प्रोजेक्ट्स, इन एक्चुअल प्रोजेक्ट्स एंड लाइव कंपनीज, वी यूज द प्राइवेट एंड पॉइंट्स. Once we select the private endpoint, it's basically your company's IP or Zscaler IP or Pulse Secure Network or any kind of VPN for that matter. Right now, we are not using any VPN. That's why click on public endpoint. It is fine. And we are not using any kind of sensitive data. All our data sets are open data sets. Okay. इस पेज पर किसी को कोई डाउट? No, sir. ओके. सबने पेज कंप्लीट कर लिया? Yes, sir. Let's click on next then. Data factory encryption. See, read it here. By default, data is encrypted with Microsoft managed keys. Okay. हमने कस्टमर मैनेज्ड कीज पढ़ी है. इसमें क्या होता है कि हम एक की बनाते हैं जिसके थ्रू सारा डेटा एनक्रिप्ट होता है. फॉर एग्जांपल, जब हमने एक्सटर्नल टेबल बनाए थे सर्वरलेस सीक्वल पूल में, उसके लिए हमने डेटा सोर्स बनाया. डेटा सोर्स बनाने से पहले हमने डेटाबेस स्कोप क्रेडेंशियल बनाए, और उसके पहले सबसे पहले हमने मास्टर की बनाई थी. मास्टर की क्या है? इट इज अगेन एन key created by me. I am a customer. So it's a customer managed key created by me for the encryption of the all the secure things that I am putting. Same way, it is asking, already Microsoft is encrypting the data. Do you want to put again a separate encryption? Okay. Now this property is completely depends on project to project. Okay. किसी प्रोजेक्ट में इसको ऐसे चेक किया जाता है और किसी प्रोजेक्ट में नहीं किया जाता. जब भी आप इस चेकबॉक्स को चेक करते हो किसी प्रोजेक्ट में, तो आपको यहाँ पर की वॉल्ट, जो एक सेपरेट सर्विस है जो हम बाद में पढ़ेंगे, उसका यूआरएल देना होता है. और बेसिकली उसका यूआरएल क्यों देना होता है? क्योंकि जो भी इंक्रिप्टेड पासवर्ड जो हमने बनाया है वो हम इसमें स्टोर करते हैं. ओके. कीवर्ड क्या होता है इन सिंपल टर्म? आप वो गवर्नमेंट आईडीज वगैरह स्टोर करने के लिए वो लॉकर आता है ना, डिजी लॉकर. Yes, yes, राइट. दैट कंसिडर्ड एज अ डिजी लॉकर. ओके. yes. but it is far more secure than the DigiLocker. Anyways, so consider it as a कि आपने एक पासवर्ड बनाया, ठीक है, और आपने उसको डिजी लॉकर में सेव किया. ठीक है.
और फिर आप क्या करते हो, उस डिजी लॉकर का पाथ यहाँ पर देते हो और बोलते हो जब भी मैं डेटा फैक्ट्री यूज करूँ, जो भी मेरा कोई डेटा इनकमिंग या आउटगोइंग हो, तो उसको इनक्रिप्ट करे, वो की अप्लाई कर। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी की हमें जरूरत नहीं है। लेट्स क्लिक ऑन अनचेक। ओके, एनी क्वेश्चन ऑन दिस पेज एडवांस्ड? सबने कंप्लीट कर लिया ये पेज? Yes, sir. ओके, लेट्स क्लिक ऑन नेक्स्ट। टैग्स, tags are familiar to you now. Does anyone here just not remember what a tags are? सबको पता है टैग्स क्या है, तो उस अकॉर्डिंग आप अपने अपने टैग दीजिए। ठीक है, एवरीवन कंप्लीटेड दिस पेज? Yes, sir. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट। The last page is review and create. Once you are here, all the details that you have inserted or inputted will show it here. If you are okay, click on create. Sir, Yes. here is basic page. I'm on basic page. Okay. What question you have on basic page? Can you again go back on basic? Yes, I am on basic page. Question है आपका? Uh, there is a subscription free tile and Correct. a resource group. रिसोर्स ग्रुप जो आपने बनाया होगा, आपके ड्रॉप डाउन, अगर आप यहाँ पे जो एरो है यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको रिसोर्स ग्रुप मिलेंगे जो आपने बनाया है। आप उसमें से कोई भी एक Okay, रिसोर्स ग्रुप चूज कर सकते हो। then in that instance details name is नेम whatever आप, हाँ बोलिए। whatever name we want to give. यस, यू कैन प्रोवाइड वॉट एवर नेम यू वांट टू गिव। Okay, thank you, sir. बाकी के पेज में आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। ठीक है, आप सीधे सीधे यहाँ तक आ सकते हो, टैग्स तक। फिर आप यहाँ पर आपका जो भी टैग्स है वो देना चाहते हो तो दो, वरना आपने एम्प्टी भी छोड़ा तो भी कोई इशू नहीं है। और उसके बाद डायरेक्टली आप रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक करके आप क्लिक कर दो। ठीक है, समझ गए होगी तो? Yes, sir, but there is a error in tags. यू जस्ट नीड टू, Tag name is required, or I have already given tag name. ने दिया है या नहीं दिया टैग में? दिया है सर। हाँ तो ओके, क्या एरर क्या है उसमें? मैंने दोनों लाइन में टैग नेम लिए हुए हैं, इंटेल वीआर बैच सेशन और डेट नीचे वैल्यूज में, लेकिन फिर भी टैग नेम इज रिक्वायर्ड दिखा रहा तो कोई फील्ड वहाँ पे एम्प्टी है क्या, जैसे यहाँ पे है मेरा? है। नहीं, ऑलरेडी दिए हुए सर दोनों। शो मी योर स्क्रीन। Yes, 1 minute सर। सर एक्चुअली मैंने मोबाइल से कनेक्ट किया है और मैं लैपटॉप पे क्लिक कर रही ठीक है, एक काम करना, फिर से एडवांस टू टैग्स जाना। अगर फिर भी तुम्हें इशू आ रहा है, जब तुम लैपटॉप में ओपन करो तब शेयर कर दो। ठीक है, हूँ। ये ये सर। स्क्रीनशॉट डाल दो चार्ट में, मैं चेक करूँ। या ओके, तो सबका आपका एजोर डेटा फैक्ट्री रिसोर्स बन चुका है? Yes, ऑल ऑफ sir. यू हैव क्रिएटेड डेटा फैक्ट्री? Yes, ओके, sir. Yes. Yes, sir. ग्रेट। सो हियर वी गो, रिसोर्स सेशन आरजी, यहाँ पे आपका डेटा फैक्ट्री रिसोर्स क्रिएट हो। ठीक है,
लेफ्ट साइड में आपके सेटिंग्स जो रहते हैं वो मोस्ट ऑफ द रिसोर्स, ठीक है, के लिए सेम रहते हैं, जैसे डेटा फैक्ट्री, ब्लॉब हो गया, Sir, आपका Your स्नैप screen स्टूडियो। is not visible. Oh, I'm sorry. Oh, is it visible now? Yes, sir. Right. So हम रिसोर्स ग्रुप से डेटा फैक्ट्री रिसोर्स ग्रुप के अंदर आ गए और मैं डेटा फैक्ट्री पे दिखता है, ठीक है, मैंने क्लिक किया। ये जो लेफ्ट साइड के ऑप्शंस होते हैं, all these options on the left side are almost same for all the Azure resources. A slight variation depends on the resources. हमने ये सारे ऑप्शंस गो थ्रू किए जब हम ब्लॉब स्टोरेज थे, डेटा लेक थे, फिर सिनैप स्टूडियो थे, तब हम डेटा फैक्ट्री में आ गए। फर्स्ट इज ऑलवेज ओवरव्यू, जो आपको ओवरव्यू देता है यहाँ पे आपका रिसोर्स ग्रुप कौन सा है, सब्सक्रिप्शन कौन सा है, आईडी क्या है उसका, टाइप कौन सा है, ओके। एक्सेस कंट्रोल में आप एक्सेस चेक कर सकते हो और दे सकते हो, परमिशन हो तो। सेटिंग्स में आपके नेटवर्किंग, प्रॉपर्टीज, लॉग्स, मैनेज एंटिटीज, ये सारी इंफॉर्मेशन आती है। यहाँ आपको क्विक स्टार्ट गाइड मिलता है। मॉनिटरिंग इज रिलेटेड टू लॉग एनालिटिक्स। दिस मॉनिटरिंग इज नॉट रिलेटेड टू योर जॉब्स, दिस मॉनिटरिंग इज रिलेटेड टू योर रिसोर्स। और आपका रिसोर्स यहाँ पे डेटा फैक्ट्री, किसी भी रिसोर्स में, भले वो ब्लॉब स्टोरेज हो, सिनैप स्टूडियो हो, उसमें लेफ्ट साइड में ऐसा एक मॉनिटरिंग टैब रहेगा। वो मॉनिटरिंग टैब जो आउटसाइड द रिसोर्स है, ठीक है, अभी हमने रिसोर्स के अंदर एंटर नहीं किया, वो आपके रिसोर्स को मॉनिटर करता है, ना कि आपके उसके अंदर के जॉब्स या स्क्रिप्ट को, ठीक है। यू कैन कॉन्फ़िगर इट टू मॉनिटर दैट एज वेल, बट यस, इट इज अ सेपरेट सर्विस रिलेटेड टू लॉग एनालिटिक्स। ऑटोमेशन इज अगेन अ सेपरेट सर्विस रिलेटेड टू ऑटोमेशन, जहाँ पर आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो पूरे के पूरे स्केड्यूल्स को। सो इट इज नॉट रिक्वायर्ड राइट नाउ, एंड हेल्प इज हेल्प, ओके। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन या कंसर्न? No, sir. No, sir. Okay. Now we'll go on to the launch option. Okay, click on Launch Studio. Just like Synapse Studio, it will open a separate window. Okay, once your window is open, your window will almost look familiar as of Synapse Studio. Okay, just a second now. मैं अभी सिनैप्स स्टूडियो की विंडो ओपन कर रहा हूँ। Yeah, see and see data factory window. They almost look similar. Okay, there are some on the left side also. You see the options are same like this. Okay, yeah. That. Now coming to data factory. Now I am in data factory resource. Okay, now on the top side you see the option. Okay, every time when you open data factory, if your data factory is not linked with any of the code repositories, you will see option. Okay, this one. Every time you will see this badge coming again and again. Just close this one. Now home is home. Basically, this is the page where you are at home. On home page, you will find an option: ingest, orchestrate, transform, configure SSIS. Okay, these are nothing but the shortcuts to create the data factory pipelines. Okay, if you are new to data factory and something, you can always use this option, but I won't recommend to use this option if you are familiar with it. Okay, the next option is author, where we are going to do all of our or most of our work here. Third option is monitor, just same as Synapse Studio that we talked about that day. Here you will see whatever the pipeline runs that are ongoing or completed. Trigger runs, the runs which are through triggers, you will see it here. CDC,
Change data capture, this is the preview feature. For this, you need to integrate the purview and the data capture will appear here. The integration runtimes, that is compute resources, will appear here, whatever integration runtimes we have. For example, self-hosted, we don't have anything. Azure, we have one. SIS, we don't have anything. Airflow. Airflow is again a job scheduler, which is Apache service, Apache Airflow. It will appear here. Okay. SSIS, service from Microsoft. Airflow, service from Apache. So Microsoft provided integration to both. Okay, here. Even if you don't know what Airflow is, it's completely fine. The next tab is manage, where again, you see all those options that we talked about. First is data factory settings. You can manage here linked services. Okay, all your connection strings, whatever you have stored with the under the link services, you will see here. Once we create, you will see it here. Integration runtimes, again, you will see all of them here. Purview. Purview is again a different Microsoft service, which is created for data lineage and catalog. If you use the purview and you connect it, you will see it here. Source control, that is repository. You see the repository linked when you linked it, okay, like Git or DevOps, you will see it here. ARM templates. So we'll talk about ARM templates. Templates is nothing but the how the code, yeah, you can see it here. Templates are nothing but the JSON files, okay. Data factory is a no code tool, okay, or let's say very less, okay, no to less code tool is data factory. So whenever we are using the UI of a data factory, the code is generated in the backend, which is in the form of JSON. Microsoft call it as a ARM template, okay. Triggers, whatever triggers or schedules that you create will appear here. Global parameters. If a parameter you define as a global parameter, you can use it into the multiple data factories. Okay. It's same as you are in SQL or Python. In SQL, you must have studied the global temporary tables. And in Python, you must have studied the global variables as well. So it is same as that, global parameters. Data flow is again a separate service inside data factory. So if we create a custom libraries to create an expression, so it's similar to your functions in SQL or functions in Python. In functions, what you do is you create a systematic steps which will execute it again and again. Libraries are like more advanced than functions, okay? Libraries can have multiple functions, okay? If you have studied Python, you must have called libraries like pandas or NumPy or anything, or MATLAB for that example. These are all libraries, okay? So they basically help you to recall or call all the functions from the libraries. Functions means set of instructions. Yeah. Credentials. Any credentials, if you want to create and put it, you can put it here. Customer managed key. We talked about that customer managed key at the start point, right? It is for the encryption. If you want to use, we can use it and put it here. And outbound roles. Okay. While creating data factory, I think it was on the second or third page. It is basically we provide the endpoints when we are moving data out of the Azure. When I say Azure, like from data factory to another services. Okay. So we have disabled this. यहाँ पर किसी को कोई question, doubt? No, Okay. sir. Yeah. See, now I click on the author and I am on this page. Okay. Okay. Now you see pipelines 0, change data capture, it is in preview, so it will be showing 0, data set 0, data flow 0, Power Query 0. Okay. These are nothing but the 0 means the resource count. Whenever we create something inside that, we will see the number there. Okay.
Now, when you click on this plus sign, that is create basically. So we'll see what you want to create. We'll ask you whether you want to create a pipeline, whether you want to create a data set, data flow, Power Query, or a copy data tool. Okay. So generally we directly go, unless we want to create a data flow, we just click on pipeline. Okay. Click on pipeline here. As soon as you click on pipeline, a similar window which we kind of observed in Synapse Studio opens. Okay. Now instead of here script, like a command window option, you see a blank screen here. On the right side, you see the properties, that is names and description you can provide. On the left side here, you see activities. All these are activities which are supported in a pipeline, okay, will appear here. Instead of supported, all the activities will appear here. You have to choose activities from here and then build your pipeline. Okay. Now I will give the name to the pipeline. Copy. ADF. Okay. This is my pipeline name. Let's say, and I click on the properties option, it will be minimized. Again, I click on properties, it will come here. Okay. So I'll minimize it now. I just do it left and let's see now. Okay. Now, if you remember what a pipeline is, हमने फ्राइडे में पढ़ा था कि पाइपलाइन क्या होती है। एक पाइपलाइन बनाने के लिए हमें कौन से ऑब्जेक्ट्स चाहिए होते हैं? Can you answer that in the chat? If I want to create a new pipeline or data pipeline, what are the objects that are needed? What are the prerequisites objects that are needed for it? Sorry? Activities. Yeah, activities are part of the pipeline. That is correct. But if I want to create a pipeline, then what are the basic prerequisite objects that I will need? That is correct. IR, link service, and data sets. IR is integration runtime. Link service will have the connection details, and data set will have the object pointers. Okay, I will show you that. See, let's say I am creating a pipeline to copy data. Forget about this ADLS and the name set. The names doesn't matter. Okay, I can give it a random name like this also. Okay, the name doesn't have any connection to what I'm going to do in data factory. Okay. On the left side under activities, आपको यहाँ पे मूव एंड ट्रांसफॉर्म एक ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है? उस पर आप क्लिक कीजिए उसके ड्रॉप डाउन पे। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, कॉपी डेटा एंड डेटा फ्लो, ठीक है? अभी फिलहाल हम सिर्फ कॉपी डेटा सेलेक्ट करें, ठीक है? क्योंकि कॉपी डेटा क्या करता है, वो एक डेटा कॉपी करने की एक्टिविटी है जहां पर आप सोर्स डिफाइन करते हो, यू डिफाइन डेस्टिनेशन एंड यू कॉपी डेटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, ठीक है? इसको कैसे करना है? अगेन आई एम डिलीटिंग दिस। जब भी आप ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे, इट्स काइंड ऑफ फोर ड्रैग एरो विल कम लाइक दिस, लेफ्ट क्लिक फ्रॉम योर माउस एंड ड्रैग इट एंड रिलीज इट। ओके, गॉट इट? आप everyone is able to drag and drop this to the right side pane for workspace? Yes, Yes. sir. Okay, great. Now, in the copy data, on the below side, settings tab will open. Okay, this or properties, whatever you want to call it. This is basically the properties tab of copy activity. Okay, if I click on the outside pane, see left, you will see the properties tab of a pipeline.
Okay. If I click on copy data, the properties tab of or configuration tab of copy data will open. Okay. So don't get confused between the outside configuration tab and copy data activity tab. ठीक है, ये चीज सबको क्लियर है? यहाँ पे किसी को कोई क्वेश्चन या डाउट? Okay, I take it as you don't have doubt on this. So click on copy data. ठीक है. In general, under name, you have the name copy data one. It is nothing but the name of this activity. Okay, you see here, exactly here I'm highlighting. Okay, I won't be able to copy data one. Now if I change it, right? Copy my ATLS 5. It is changing here. So it is nothing but your activity name. Okay,